Errors. White Water Rafting in Russia. Diary extract. Christopher and Rachel Clay set off on a trek in the Altai Mountains in southern Siberia with Russian guides Kolya, Misha, and Kolya's wife, Galia. It wasn't until the halfway point of the journey that Kolya revealed himself to be a whitewater rafting champion, and that part of their trek would involve 5 days of rafting on the mighty Katun River. 5th August. Rachel and her group are beside the vast, formidable Katun River. Kolya has planned to travel down the middle reaches of the river, still swollen from melted snow, for 5 days. Rachel finds it terrifying. Kolya, with excitement in his eyes, tells them that in some places the river is hemmed in by steep cliffs, creating long stretches of rapids, some hundreds of meters long. He loves the challenge of these rapids, especially ones that are classified as grade 6. Rachel, on the other hand, doesn't think this is the type of challenge she wants to face. Kolya and Misha had to build the raft first. They disappeared into the forest while Rachel and Galia explored the surroundings. Rachel helped Galia pick bright orange berries by the water's edge. Galia heated a flat stone on the remains of the previous night's fire and made delicious pancakes, as well as cordial from the berries. After several hours, the men returned with trees they had felled and stripped of branches. They laid them out, cut them to size, and miraculously constructed a sturdy raft out of wooden poles tied tightly with strips of rubber, cut from the inner tubes of old car tires. Then they brought out enormous rubberized canvas floats, which they filled with air by running with them to catch the wind, and tied them at each end. The raft, 12 feet long and about 5 feet across, was ready for launching. 7th August. Kolya proudly declared the raft to be unsinkable after their breakfast of noodles. However, Rachel noted that there was no protection and nothing to hold on to. They were dressed in old chemical warfare suits, heavy all-in-one rubberized suits that, while keeping them dry, were extremely cold and heavy. Rachel couldn't stop thinking about how quickly they would drown if they fell into the ice-cold water. Their seat was one of the floats, with a lumpy pack to lean on, and their only grip was on a wooden pole that had been a tree just the day before. Kolya's instructions were simple. When he said levo, they leaned to the left. When he said pravo, they leaned to the right. With these instructions, they set off into serious whitewater for the first time in their lives. At first, the river was calm, its color shifting from deep gray to green with the sun, and the mountains on either side seemed to change colors too, shades of brown, purple, and blue. Kolya skillfully navigated through the cross-currents and whirlpools, but as Rachel later discovered, this was just the beginning. The previous night, they camped on the sand at the river's edge, where yellow rock roses bloomed between the stones. The view was stunning, but Rachel worried about flash floods. The driftwood fire burned so intensely that discarded bottles melted into liquid glass. That day, they encountered their first furious rapids, terrifying for Rachel, but exhilarating for Kolya and Misha, who emerged from the wall of water with their paddles raised triumphantly. Later, they stopped at the riverbank and climbed a barely discernible cliff path to a flat, open steppe swept by hot winds, where they saw ancient stone carvings of curly-horned ibex. Afterward, they floated peacefully again, though it was sunless and deathly cold in their heavy suits. That night, they camped at a junction of rivers, where they saw the first people they'd encountered in 5 days. 2 silent men who had just finished erecting a gigantic crucifix as their contribution to the Rafters Museum. This museum was a bizarre collection of fantastically shaped sculptures made from driftwood and other debris that had been washed up at the seething river junction. The most disturbing exhibit was the carcass of a dead horse, its skin and entrails propped up as if it were about to gallop away. At another stop, Kolya moored the raft in swirling water and leaped onto the bank to gather massive badan leaves to make medicine for Galia's stomach pains. रोस में सफेद पानी की रिफिटिंग, दारी का इक्तिबास। क्रिस्टोफर और रेचल कुल्ली ने जुनूबी साइबेरिया के उल्टी पहाड़ों में एक ट्रेक पर निकलने का फैसला किया जहां उन्हें रूसी रहनुमाओं कोलिया मीशा और कोलिया की बीवी गालिया ने रहनुमाई फराहम की। ये सिर्फ रास्ते के निसफ हिस्से पर था कि कोलिया ने खुद को एक सफ़ेद पानी के चैंपियन के तौर पर जाहिर किया और इसके मंसूबे में 5 दिनों के लिए ताकतवर कातौन दरिया पर रिफिटिंग शामिल थी।
रेचल ने एक डायरी लिखी। 5 अगस्त। तो हम इस वसीज अरीज खौफनाक दरिया के पास हैं। कोलिया ने सब कुछ मंसूबा बंदी कर रखी है। हम इसके दरमियानी धारे में 5 दिन तक सफर करेंगे जो पिघले हुए बर्फ की वजह से अभी भी भरे हुए हैं। ये वाकई खौफनाक है। कोलिया बड़े जोश तो खरूश के साथ बताता है। इसकी रिप्स चैंपियन की आंखें चमकती हैं कि बाज़ जगहों पर दरिया बुलंद चट्टानों से घिरा हुआ है जो तवील लंबाई के रिप्स पैदा करता है। कुछ 100 मीटर लंबे कोलिया को चैलेंज पसंद है, खास तौर पर वो जो रिप्स के साथ हो, तरजीही तौर पर ग्रेड 6। मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए चैलेंज है। 6 अगस्त। सबसे पहले कोलिया और मीशा को रीफू बनाना था। वो जंगल में गायब हो गए जबकि हमने गालिया के साथ पानी के किनारे चमकती नारंगी बीरिख चुनने में मदद की। इसने पिछली रात की आग के बाकियात में एक चपटी चट्टान गर्म की और इस पर मज़ेदार छूटी पेनकेक्स पकाई और बीरू से मशरूब बनाया। कुछ घंटों बाद मर्द दरख्त लाए जो उन्होंने गिराए थे और अपनी शाखें उतार ली थी। उन्होंने उन्हें बिछाया, साइज में काटा और मुजिजाना तौर पर एक दरिया के लायक ढांचा बनाया। लकड़ी के खंभों को सिया रबड़ की पट्टियों से सख्ती से बांधा जो पुरानी कार के टायरों की अंदरूनी नलियों से काटा गया था। आखिर में उन्होंने बड़े रबड़ के कैनवस के फुलविट्स पेश किए जिन्हें हवा को पकड़ने के लिए ऊपर उठाते हुए दौड़ते हुए भरा गया और हर एक के आखिर में बांधा गया। ये रीफुट 12 फुट लंबा और तकरीबन 5 फुट चौड़ा था, पानी में छोड़ने के लिए तैयार। 7 अगस्त। कोलिया ने सुबह के नाश्ता के बाद फखर से कहा कि रीफुट गरकाब नहीं होगा, लेकिन कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं और पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। ये मैंने नहीं कहा। हमें पुराने कीमियाई जंग के सूट पहनने थे, इंतहाई भारी, तमाम एक रबड़ के सूट जो हमें खुश्क रखते हैं लेकिन बहुत सर्द हैं। हम नहीं जानते कि अगर हम इस बर्फानी पानी में गिर गए तो ये चीज़ें हमें कितनी तेज़ी से नीचे खींचेंगी। हमारी नशिस्त एक फ्लोट में है जिस पर झुकने के लिए एक चुटकी है, कोई बेल्ट नहीं, बस वही दरख्त जो कल तक एक दरख्त था। पकड़ने के लिए हिदायत मुख्तसर थी। जब कोलिया कहता है लेवल तो हम बाईं झुकेंगे, जब वो कहता है परवा तो हम दाएं झुकेंगे। हम अपनी ज़िंदगी में पहली बार संजीदा सफ़ेद पानी में निकले और मुझे उम्मीद है कि ये आखिरी बार होगा। इब्तिदा में हम आराम से तैरते रहे। दरिया गहरा सुरमई रंग में था जो सूरज की रोशनी में सब्ज होता जा रहा था। पहाड़ दोनों तरफ, पीछे और सामने थे। उनके रंग हर घंटे के साथ भूरी, अर्गवानी और नीली की शेड्स में तब्दील होते रहे। सुकून को कोलिया के अचानक चक्रों में कूदने के साथ तोड़ा गया जो चालाकी से चक्कर करते रहे। मालूम हुआ कि ये तो सख्ती का आगाज भी नहीं है। 8 अगस्त। गुज़श्ता रात का कैंप परिया के किनारे रेत तर था जहां जर्द पत्थर के गुलाब पत्थरों के दरमियान खिल रहे थे। हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत, लेकिन मैं सैलाबों के बारे में फिक्रमंद थी। लकड़ी की आग इस शिद्दत से जल रही थी कि इसने खाली बोतलों को माए शीशे में तब्दील कर दिया। आज हमने अपने पहले गजबनाक रिप्स का सामना किया। खौफनाक, लेकिन कोलिया और मीशा के लिए खुशगवार थे। जब वो पानी की दीवार से बाहर निकले, उनके पैरस फतह के निशान के तौर पर बुलंद हुए। बाद में हम दरिया के किनारे रुके और एक मुश्किल से नजर आने वाले चट्टान के रास्ते पर चढ़ गए ताकि कदीम पत्थर की कंडाकारी को देख सके जो मुड़े हुए सींग वाले आइबक्स के थे। इसके बाद हम आराम से तैरते रहे, लेकिन अपने भारी सूट में सूरज की रोशनी से बेनूर और मौत की सर्दी में। गुज़श्ता रात का कैंप 2 दरियाओं के मिलाप पर था जहां हमने 5 दिनों में पहली बार लोगों को देखा। 2 खामोश मर्द अपने रीफरज म्यूजियम के लिए एक अजीम सलीब इरेक्ट कर रहे थे। एक अजीब व गरीब मजमुआ जो पत्थरों के तौदों और जो कुछ भी खमियाजे की तरह खड़ा था कि फैंटेस्टिकली शेप मुजस्समे बनाता है। सबसे ज्यादा खौफनाक एक मुर्दा घोड़े की लाश है जिसकी जिल्द और अंदरूनी आज़ा को इस तरह खड़ा किया गया है जैसे वो अभी दौड़ने के लिए तैयार है। एक और रुकना खतरनाक था। कोलिया ने दरियाई पानी के एक चक्कर में रीफुट को बांधा जब वो किनारे पर छलांग लगाकर बड़े बादाम के पत्ते जमा करने के लिए गया ताकि गालिया के पेट के दर्द के लिए दवा बना सके। Here are the answers to the questions based on the text provided. 1. What produces rapids in the river? Rapids are produced when the river is hemmed in by steep cliffs, which creates long stretches of turbulent water. 2. In what ways could Gallia and the guides be called enterprising? Gallia and the guides demonstrated their enterprise by foraging for berries, cooking pancakes, and utilizing natural materials to build a raft, showing resourcefulness and initiative. 3. Kolya and Misha's only tool was an axe. What did they do which would normally require a tool, nails, or a machine? How did they build the raft without these aids? They built the raft by felling trees, stripping them of branches, and tying them together using rubber strips from old car tires, creatively using the materials available instead of traditional tools. Number 4. What were the advantages and disadvantages of the protective suits for Rachel and her husband?
The protective suits kept them dry but were very heavy and cold, providing protection without mobility or warmth. 5. What different emotions did Rachel experience? Rachel experienced a range of emotions, including fear and exhilaration, as she navigated the treacherous rapids, alternating between feeling terrified and exhilarated by the challenges. 6. Why do you imagine August 10th was such a shattering day for Rachel? August 10 was likely shattering for Rachel due to the intensity of the rapids and the dangers they faced, which would have been both physically and emotionally overwhelming. 7. Why was the red canoe such an unsuitable craft for the two men inside it? The red canoe was unsuitable because it was not stable enough for the rough conditions they faced, making it risky for the men to navigate safely. 8. How does the description of the position from which Rachel watched the final rapids compare with that of the raft descending the rapids? Would you have preferred to be on the raft or on the riverbank? Give your reasons. Rachel watched from the safety of the riverbank, feeling anxious for those on the raft as it descended the rapids. Personally, I would prefer to be on the riverbank for safety, as being on the raft would involve greater risk and danger in such turbulent waters. Answers to reading for detail. Source of the river, in the Altai Mountains fed by melted snow. Kolya's feelings, excited, thrilled, adventurous. Rachel's feelings, terrified, anxious, hesitant. Exclamation mark shows Kolya's enthusiasm and excitement. Miraculously indicates Rachel found the raft building impressive and surprising. Contrasting conditions, deep gray turning to green, and surging cross currents. Skill word, dexterously. Bizarre, describes the strange sculptures. Quotes indicate it's an informal title. Vocabulary Part 2, difficult words and their meanings. 1. Hemmed in, H enclosed. 2. Aloft, I overhead, lazily. 4. Discarded, K thrown away. 5. Discernible, B visible. 6. Bizarre, C eccentric. 7. Seething, D foaming. 8. Entrails, E innards. 9. Precarious, L hazardous. 10. Dodged, A avoided. 11. Lethal, F deadly. 12.